Good morning, students. Today we will start with the new topic, and this topic is very important, that is replication. We have already discussed that what is the meaning of replication. Replica means a copy. So how the DNA it is forming its own copy, that process is called as replication. We have studied about the central dogma given by Francis and Crick. So in that model, we have studied about the process of replication, that is the first step of the central dogma, that how the genetic information it is traveling. Okay, so first process is replication. So here in this section, this is very important section. Here what you will learn, that what are the various enzymes, what are the machinery which is participating in DNA replication. So there are many of the enzymes and proteins which are participating in the replication process. So you have to learn the functions of all the enzymes. It is important in the view of NEET as well as for the view of a board exam. Okay, so first enzyme is DNA dependent DNA polymerase enzyme. Now the word DNA polymerase means it will help in polymerization, it will help in forming the long chain of DNA. And why it is called as DNA dependent? Because on the dependency of the one strand of DNA, the new strand is formed by the help of this enzyme DNA polymerase. Okay, so this DNA polymerase, it will read the message from the DNA strand, one of the DNA strand, and then form the new DNA. That's why it is called as DNA dependent DNA polymerase. Then next comes the helicase enzyme. Now the DNA it is wrapped in the helical form. So when it has to unwind, when it has to open, so for opening of the DNA strand, the enzyme which is called as helicase is required. This helicase enzyme, it will open the DNA helical and form the replication fork. Okay, so what is the function of helicase? It is to unwind the double stranded DNA. Now while unwinding of the double stranded DNA, there comes the टेंशन, देयर क्रिएट्स द टेंशन. ओके, वहाँ पर स्ट्रेचिंग हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो जाती है. तो उस टेंशन से, उस स्ट्रेचिंग से कई बार क्या हो सकता है, डीएनए स्ट्रैंड ब्रेकअप हो सकता है. तो उस चीज़ को रिलीज़ करना, उस टेंशन को, उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हमारे पास एंजाइम है टोपो आइसोमरेज, और इट इज़ नोन बाय द अनदर नेम कॉल्ड एज द गायरेज enzyme. So what is the function of topoisomerase or gyrase? It will release the tension that is produced due to the unwinding of the DNA. Clear? Then comes, there is a set of proteins called as the single stranded binding proteins. These single stranded binding proteins, they are providing the stability to the separated single strand. अब एक बार strand separate हो गया, ठीक है, तो हो सकता है वो दोबारा से भी फिर जुड़ जाए. तो इस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पर कुछ स्पेशल सेट ऑफ प्रोटीन्स जाकर जुड़ जाती हैं, जो उस अनवाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड है, उनको क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है. देन कम्स द प्राइमेस एंजाइम. ये जो प्राइमेस एंजाइम है, ये क्या करता है, ये बेस पेयर्स को यूज़ करता है, AUGC को, ठीक है, फॉर द आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन. आरएनए प्राइमर फॉर्मेशन के लिए इन जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनको यूज़ करता है. नाउ एट लास्ट कम्स द डीएनए लाइगेस. डीएनए लाइगेस एंजाइम, लाइगेस का काम होता है ग्लूइंग का, किसी भी चीज़ को जोड़ने का. सो अभी आप डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारी छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स बनती है, जिनको ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. तो इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम है, ठीक है, इनको जोड़ने का काम किसका है, डीएनए
ligase का. One more thing, important thing, ये नीट में भी आता है, that what is primosome? Helicase enzyme that was unwinding the DNA strand, okay, and the primase enzyme that is providing the RNA primer formation. इन दोनों एंजाइम की एसोसिएशन को हम क्या बोल देते हैं? प्राइमोसोम बोल देते हैं. ओके, सो आई होप आपको मशीनरी क्लियर हो गई है. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन. दैट इज अगेन important topic, that how replication it takes place. Now this replication process is quite complex process which is divided into various steps. Clear? So the first step of replication is activation of deoxyribonucleotide. What is the first function? Activation of deoxyribonucleotide. It means we are talking about the DNA nucleotides. So when the deoxyribonucleoside monophosphates, they are basically present in the nucleoplasm. Okay, when these are activated into the triphosphates, monophosphate से किस में convert होते हैं? ट्राइफोस्फेट में कन्वर्ट होते हैं by uniting with the ATP. ठीक है, ATP से मिलकर deoxyribonucleoside monophosphates, they get converted into the triphosphates. Okay, so this process of conversion of monophosphate into triphosphate by using the ATP is called as phosphorylation process. Okay, so it is important. What is the first step of replication process? Phosphorylation process. Clear? Then come to the second process, second step of replication, that is recognition of initiation point. यानी DNA replication कहाँ पर start होगी उसकी recognition करना, उसके origin को recognize करना. Now DNA replication is initiated at the defined sequence of nucleotides. एक particular sequence होता है, particular repeated sequence होता है nucleotides का, वहीं पर उसी sequence पे ही हमेशा DNA की replication की origin होती है. और वो जो एक defined sequence होगा nucleotide का, उसको हम या तो origin of replication बोलेंगे या फिर Ori point बोलेंगे. ठीक है? Then comes the next part, that is initiation. It means now in actual the replication has been started. Now initiation means starting. Now the complementary strands of DNA double helix, they are separated by enzyme DNA helicase. हमने पढ़ा था कि जो winded double stranded DNA के strands हैं उनको unwind कौन कराएगा, उनको खोलने में कौन help करेगा? DNA हेलिकेज करेगा. सो ये जो अनवाइंडेड स्ट्रैंड्स होते हैं वो दोबारा से रीवाइंड होने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पर भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उस टाइम पे दोनों अनवाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ कुछ स्पेशल सेट ऑफ प्रोटीन्स आकर जुड़ जाता है जिनको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. SSBs आकर जुड़ जाती हैं, SSB प्रोटीन्स आकर जुड़ जाती हैं जो अनवाइंडेड डीएनए हेलिक्स स्ट्रैंड्स हैं उनको दोबारा से रीवाइंड नहीं होने देती. नाउ द अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट फॉर्म्स द वाई शेप स्ट्रक्चर, वाई शेप कॉन्फिगरेशन in the DNA duplex, which is called as replication fork. So if in paper replication fork diagram comes, so it is also given in your book, the diagram of replication fork, and I have also made the diagram of replication fork. Okay, so here you have to remember that how the replication fork it looks like. Now it has two strands. First one is 3' to 5' strand and another one is 5' to 3' strand. Okay, now in front of that new strand is formed from 5' to 3' in both the opposite sides of both the strands, but one of the strand it is formed continuously and another one it is formed in kind of fragments. Okay, so let's have the view that what
is the difference between these two strands. So the next step is elongation step. As name is suggesting us, after initiation what will happen? Elongation will take place. Elongation means now the new strand is forming. Okay, elongation में नया strand बनेगा. So there was an enzyme called as the primase enzyme which will initiate the replication of strand that is oriented in the 3' to 5' direction. Now this generate the nucleotides, that is 10 to 60 nucleotide long primer RNA. अब यहाँ से हमारे पास प्राइमर RNA आता है. New strand of DNA is always formed in 5' to 3' direction, and we will take the template as 3' to 5'. Template वो strand होता है जिसके अकॉर्डिंग नया strand बनना होता है. ओके, सो जो नया स्ट्रैंड बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से, दैट इज बाय द एडिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टू द 3' एंड ऑफ द प्राइमर आरएनए. प्राइमर आरएनए के 3' एंड पे क्या होगा? न्यू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंटर करेंगे, ऐड होंगे. सो रेप्लिकेशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन 2 पॉइंट्स का. जो रेप्लिकेशन हो रही है 3' to 5' की, दिस इज 3' to 5' स्ट्रैंड, जो इसकी रेप्लिकेशन हो रही है वो कॉन्टिन्यूस होगी. एंड दिस स्ट्रैंड दैट इज कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये फटाफट से हो जाती है. ठीक है, ये जल्दी से हो जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग strand. Now if we talk about the another strand of the DNA, that is 5' to 3' strand, इसके सामने जो भी नया DNA बनेगा वो फिर दोबारा से 5' to 3' ही बनेगा. लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया कि जो नया DNA बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, वो फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज हो रहा है. एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये लीडिंग से पीछे है अभी. ठीक है, इसकी फ्रेगमेंट्स को भी जुड़ना पड़ेगा. क्लियर? सो रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, इट जनरेट स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स कॉल्ड एज ओकाज़की फ्रेगमेंट्स. तो जब हमारे पास, अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड की जो फ्रेगमेंट्स बनती हैं, ओके, जो स्मॉल पॉलीन्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बोलते हैं. एंड later on these Okazaki fragments, they are joined together by the specialized enzyme we have already discussed, that is DNA ligase enzyme. Okay, so this was the process of replication. I hope आपको समझ में आ गया है. Clear? Thank you.